Hey guys, what's up? This is Anmol from Tech Abstract, and this is the story of the best custom ROM that I have ever used, which is the Resurrection Remix. First of all, thanks to you all guys, क्योंकि हमने 2K सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिए हैं. एंड विदाउट बीइंग सेड, एक ओवरव्यू करते हैं रेजरेक्शन रिमिक्स रोम का. सो लेट्स प्ले द इंट्रो. Ask you what you're thinking about. Ask you what you're dreaming about. Say your life is full of doubts. You don't know what you're talking about. You tell me what's on your mind, but how can you be so blind? I am the one who's hurting, but I'm just a burden in the chaos. So the Resurrection Remix ROM is famous for its customization options. You will get the CYANOGEN pattern, which is 6x6, 3x3, 4x4 and 5x5, which is kinda unique and कोई भी गैस नहीं कर पाते जल्दी पैटर्न्स को. इसके अंदर आप अपना रिसेंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो स्टॉक AOSP, ग्रिड, ओमनी स्विच और स्लिम से. एंड इफ़ यू थिंक यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, दैन यू आर रॉन्ग गाइस. इसमें आपको कस्टमाइजेशन के कन्फिगरेशंस में आपको स्टेटस बार, पैनल एडिट, रिसेंट ऑप्शन एडिट, क्विक सेटिंग एडिट्स, लॉक स्क्रीन एडिट्स, gesture edits, button edit, even you can apply a custom navigation bar on your display, animations, interface, miscellaneous and a lot of stuff inside it. The next thing, which is a main requirement of every user, is the performance. Here you will get a lot of interfaces for performance like power save, efficiency, balanced and performance. On every profile you will get the most out of your device. Even you can get extreme power saver mode जब भी आपको अपनी बैटरी बचानी हो. And this ROMs never disappoint you while multitasking. मल्टीटास्किंग में मुझे यहाँ पे एक भी बग यहाँ पे फील नहीं हुआ है और मैं इस रोम को 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम फॉलिंग इन लव विद इट. जो मेमोरी मैनेजमेंट है दिस रोम, उसमें सब कुछ किलर है गाइस. मैं यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा हूँ एंड माय फोन डजंट लैग अ सिंगल टाइम. बैटरी बैकअप इसमें मुझे बहुत अच्छा मिल जाता है. मैं एक बार फ़ोन को मॉर्निंग में चार्ज करता हूँ एंड बैटरी बहुत जल्दी यहाँ पे ड्रेन नहीं होती है. नाउ लेट्स लुक ऑन द कैमरा ऑफ दिस रोम. जितना हार्डवेयर में कैमरा अच्छा होना चाहिए, उतना ही सॉफ्टवेयर का भी कैमरा अच्छा होना चाहिए फॉर क्लिकिंग बेटर पिक्चर्स. सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं. इसमें हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है एज अ CYANOGEN रोम में जो आता है वो यहाँ पे मिल जाएगा. और फोटोज़ यहाँ पे आपको वेल सैचुरेटेड मिल जाएंगी. मैं बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता हूँ और बिना प्रोफेशनल मोड के जो ऑटो सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे बहुत ही ऑसम होती हैं. एंड नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट कम्स इन. इसमें आपको EIS मिल जाता है इस रोम में. अगर आपका फ़ोन OIS है तो इसमें आप आर्टिफिशियली EIS सपोर्ट कर सकते हो. That's it for this video guys. I hope you love it. And if you did so, please like and comment and tell me how the video was. And yeah, don't forget to subscribe this channel for more videos like this. Don't forget to share it with your Android wala rooted friend. And I will catch you up in the next one. Till then, peace.